Okay, so let me tell you, this is a group task for HPCL we are doing. So as you already know that HPCL is asking the same kind of group task. But what I have seen is like students are still not confident in introducing and concluding the task, though they know the task. So for the past couple of days, what we are doing is like I'm giving you the same task which is going to come, and you guys are to practice for introduction. In the introduction, what is required is like you tell about the task to everyone and tell how you want discussion to be there. And then after once everybody has introduced, then we discuss about the topic, and then one of us concludes. Now after that, I give you feedback to each one of you where is the scope of improvement. So in the introduction, I'll go one by one. First, I'll show you the task. Then in the introduction, you people are to tell the task to others, whether in Hindi or in English. Keep one language only. And then tell how you want discussion to be there. And try to summarize this within 1.5 minutes only. 1 to 1.5 minutes. So after that, once everybody is introduced, I'll take you to the discussion part and then we conclude it later on. So let me share the screen with you and then we discuss it further. Okay, so now I want each one of you one by one start introducing the topic. Whosoever is ready, start introducing the topic. Anyone? Good evening, friends. I take the opportunity to initiate the discussion. Friends, we have given about the state business that we have a food business that is going through 15 years, and we have to suggest methods to expand
expand the business. And the second we have is about the real old non-food business. So we have to new methods how we can enter into this new business. So for this non-food business, first we have to consider that whether we are in profit, and we have to first analyze its condition. And it is also given that um, students and office person are walking through the road. So we have to, our business should be उनके अराउंड आसपास ही होना चाहिए. Thank you. Good evening, everyone. My name is Shivam Tulshan, and I would like to I would like to introduce the GT topic that has been given to us, which is about the SETH business. So SETH is going to start. SETH is starting its business, which has been running since 15 years, which is so long. And there are it is a location of South Bombay, which is a posh area in which every type of rich people and their students lives, and some people goes to office, and their kids goes to school. And so we have to strategize a business plan for a restaurant so that we can maximize our profit. So that we can maximize our profit. So we have been given a building which has a sitting capacity of 50, but it is a 3-floor building, but we have this only 1 floor working. And they have also entered into non-food business. So we have to strategize both the restaurant and other business aspect which we can think of. And if those business ideas works, then SET can also expand its business in other location as well. So I open the house for discussion. Thank you. Good evening, everyone. I am Ravikiran. I would like to take this opportunity to introduce this topic. Here we have given the topic of SET as a business, and he is in the business for 15 years in South Bombay, which is around many offices and schools. So it has great customer base potential. And coming to the building, we had 3/4 building, in which first floor is only operational currently, and with the 50 seating capacity. And there is also ample space provided in front of our capacity. And recently SET has taken initiative of non-food business also. And as here we are as a new marketing manager, need to strategize the business strategy and also to increase the sales and profit. So I think we need to look at we need to look this as food business and non-food business in 2 different directions, and then strategize the things in how we can increase the sales and the profit margins in food business. And non-food business, we need to discuss about things where it will be complementing the food business. Now I open the house for discussion. Okay. Hello friends, Good I am morning, Kushagra friends. Vashisht. I would like to take this opportunity to initiate this conversation. The problem given to us is related to a food business, and we are managing a SET business here. So as we have been given we are holding a designation of market engineer, where we need to come up with a business strategy. So in particular, what we have to do is that first we need to analyze the whole situation. And by that, what the 2 ways that we could expand the food business and the non-food part. So one policy that we can attend or can think of is to find a non-food business that would in turn help the food business, like making like opening a movie theater or a gaming arena. Or in another way, so as it is also written that we have a very wider, since we've been working for 15 years, and we have to target a very wider audience, from kids to even people who are going to offices. So we need a holistic policy, not merely focusing on some particular age group. So by considering all these factors, we need to come up with solutions, and the only purpose is to increase the sale and the profit of the company. So now I would like to open this conversation, and I am ready for all your intels. Thank you. Good evening, Good everyone. morning. Good evening, everyone. I am Subham Saurav. I take the opportunity to initiate the discussion.
we have been given a topic in which Mr. Seth is a businessman in South Bombay, and he is dealing with a food business, which it has 3-floor building and ample space in the front. And he has new plans, like he is going to he is going to enter into non-food business. And we are hired as a marketing manager, and we have to discuss the ways in which the non-food business can be expanded, and suggest the ways to help food business also. So we are going to discuss in the way about the non-food business. In the non-food business should be such that it should be in sync with food business, and mainly it should be targeting the customer base of available food business. And we would be discussing the various available choices for that, and we would be analyzing the food business that could help to increase its business. So I open the house for discussion to all. Good morning, friends. My name is Hitesh Singh, and I would like to introduce our topic, which has been related to the SETH business. So in this topic, there is a one SETH business, which is pre-found business, and जो कि मुंबई के साउथ मुंबई में पिछले 15 सालों से रन कर रहा है। और साउथ मुंबई एक ऐसा इलाका जहाँ पे काफी रिच लोग रहते हैं, और उस एरिया के अंदर काफी फुट वर्कर्स लाइक ऑफिस गोइंग मैन एंड किड गोइंग आते जाते रहते हैं, मतलब काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इस एरिया के अंदर सेट के पास 3 स्टोरेज बिल्डिंग है। उनमें से एक बिल्डिंग अभी भी सर्विस के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी अभी 15 लोगों की है। और इसके साथ साथ से जो बिल्डिंग है उसके सामने काफी खाली जगह है, जिसके लिए सेट इसको और बिजनेस के लिए एक्सप्लोर कर सकता है। इसके अलावा अपने पास सेट इस बिजनेस के अलावा पिछले 3 सालों से नॉन फूड बिजनेस में भी काम कर रहा है। तो इस चीज के लिए सेट पहले इस बिजनेस को साउथ मुंबई में ट्राई करना चाहता है। अगर ये बिजनेस वहां पे सक्सेसफुल रहा तो ये अपने इस बिजनेस को अगर दूसरी लोकेशन पे भी एक्सप्लोर करेगा। तो इसके लिए इसने हम सब लोगों को एज ए मार्केटिंग मैनेजर हायर किया हुआ है, जिससे हम उसकी जो भी बिजनेस है उसकी सेल्स को इंक्रीज कर सके और उसको कंटिन्यू प्रॉफिट दे सके। और दूसरा, हमें दो तरीके सजेस्ट करने हैं जिससे जो उसका फूड बिजनेस है उसको वो फर्दर एक्सपेंड कर सके। तो थैंक यू, और आई वुड लाइक टू ओपन दिस डिस्कशन फॉर ऑल। Good evening, Good friends. evening, everyone. My name is Dharmendra, and I would like to take the initiative to introduce the task given to us. SETH is having a non-food business which has been successfully running since 15 years in the area of South Mumbai, where most of the people are rich, and they are having three floors of building, in which one floor is being occupied with a restaurant of 50 seating capacity, and the 2 floors are currently empty. And there is a lot of space in front of the building. So recently they are interested in opening a non-food business, and if it gets successful, they are in the expansion plans. So we have been recruited as the new marketing managers, and they're expecting us to give some innovative ideas for the profit gain. And here we have 2 objectives. Firstly, we need to suggest the best non-food business for better sales, so that it will be successful. And secondly, we should also give innovative ideas which will helpful in increasing the sales of the existing food businesses. So I think we can firstly we have to make use of our assets which are having presently optimally, so that we can gain more sales can be done. And also since we have been running successful since 15 years, so we'll be definitely having a huge customer base. So I think we can make use of it also for promotions and everything. So here I'm opening the house for discussion. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है। जैसा कि आज का डिस्कशन का जो मुद्दा है सेठ का बिजनेस है। सेठ का बिजनेस जो पिछले 15 साल से फूड बिजनेस में चल रहा है, और हमें साथ ही साथ वह नया नॉन फूड बिजनेस की ओर ध्यान दे करके नॉन फूड बिजनेस को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से कैटेगराइज करना चाहिए कि जो मेरे पुराने कस्टमर है वो तो बना ही रहे, साथ साथ नया कस्टमर को अपने मार्केटिंग में जोड़ सके। एज ए सेल मैनेजर हम लोग को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस मुद्दा पे हम नॉन फूड बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर यह प्लान सक्सेसफुल करता है तो हम नया लोकेशन पर भी इस प्लान को सेटअप कर सके। इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, आप इस डिस्कशन में भाग लें। Good evening, friends. I take this opportunity to introduce this topic. यहाँ पर एक सेट का बिजनेस है जो 15 साल से चल रहा है, और जहाँ पर
ऐसे एरिया में है कि जहाँ ऑफिस गोइंग पीपल्स हैं एंड स्कूल गोइंग किड्स हैं, जो कि मतलब रिच पीपल्स आर लिविंग देयर, वहाँ पर रिच पीपल्स रहते हैं। और इसके जहाँ पर बिजनेस है वहाँ 3 फ्लोर्स है। 1 फ्लोर में रेस्टोरेंट अभी यूज में है और 2 फ्लोर्स अभी वैकेंट है, और फ्रंट एरिया भी कुछ है उसका जो वैकेंट है। तो हमें इसमें प्लान करना है कि उस एरिया को किस तरह यूज किया जाए, और एज अ मैनेजर वहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर हमें ये डिसाइड करना है कि उस 2 फ्लोर्स को क्या यूज किया जाए जो कि हमें मोर प्रॉफिट दे और इफेक्टिवली प्रॉफिट गेन करें हम लोग। और यहाँ पर ये भी है कि हम ऐसे नॉन फूड बिजनेस हम लोग यहाँ पर ओपन करना चाहिए जो कि हमारे रेस्टोरेंट को भी उन कस्टमर को यूज कर सके। तो हमको इस वे में हमको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक मेथड बनाना चाहिए कि किस तरह हम अपने मार्केटिंग को और अच्छा कर सकते हैं। So friends, now I open the house for discussion. Good evening, friend. Good evening. Friend. I am glad to start the topic. आज का टॉपिक है सेठ बिजनेस। सेठ का बिजनेस साउथ मुंबई में रेस्टोरेंट का एक बिजनेस है, जहाँ पर 3 फ्लोर हैं और एक फ्लोर पे ही कार्यरत है, और फ्लोर के सामने जो काफी स्पेस है, और रेस्टोरेंट के सामने काफी स्पेस है। उस बिजनेस को अदर लोकेशन पर भी ओपन करना है, तो और कंपनी की प्रॉफिट को भी बढ़ाना है। तो हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, इस पर डिस्कस करना है। Okay. Good evening, friends. My name is Anupam Kumar. I thankful to all to give me opportunity to initiate this GT topic. Today topic is SETH business, and यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि जो हमारा SETH बिजनेस है वो 15 साल से फूड बिजनेस में ऑलरेडी काम कर रहा है, और ये साउथ मुंबई के एरिया में है, जहाँ पर एक इंडिकेशन दिया है कि रिच पीपुल का एरिया है, और साथ में हमारा कस्टमर जो है वो रिच पीपुल है, साथ में जो फुट वाकर हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, एंड प्लस में किड्स गोइंग टू स्कूल है। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमें ये 3 लोगों को, 3 प्रकार के कस्टमर्स को पहले टारगेट करना चाहिए, एंड देन दूसरे कस्टमर्स को पकड़ना चाहिए। दैट इज कि हमें अपने जो अपना एक्सपेंशन है इसी के अनुसार करना चाहिए। सेकंड थिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 फ्लोर बिल्डिंग है, और यहाँ हमारे पास एक फ्लोर बिल्डिंग में ऑलरेडी 50 सीट का कैपेसिटी है और वो चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि केवल 2 ही बिल्डिंग खाली है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और व्यू में देखें तो हमारे पास एक रूफ टॉप भी खाली है, जिसे हम लोग ओपन रूफ टॉप या फिर ओपन स्काई डिनर के लिए यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड इंडिकेशन है यहाँ पर कि एम्पल स्पेस इन फ्रंट। तो यहाँ हम एम्पल स्पेस फ्रंट को बहुत सारे पार्किंग के रूप में या फिर वेंडर के रूप में यूज कर सकते हैं, और इस प्रकार से। और साथ में एक चीज और दिया गया है कि ये सेठ बिजनेस जो है वो नॉन फूड बिजनेस में भी इंटर कर चुका है, 3 ईयर से ये ऑलरेडी इसमें कार्यरत है। तो हमें एक ऐसा बिजनेस गाइडलाइन देना है एज ए मार्केटिंग मैनेजर कि कैसे हम जो 15 साल से जो फूड बिजनेस है उसको भी एक्सपेंड कर सकें, और साथ साथ जो न्यू फूड बिजनेस है उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है कि कौन सा नॉन फूड बिजनेस यूज करना है। तो ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फूड बिजनेस है उसी को सपोर्ट करने वाला हो, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग को विचार विमर्श करना है। तो नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कसिंग ऑन दिस ऑल टॉपिक। थैंक यू। Okay, so I believe everybody has spoken. Now we enter into second part, which is related to the discussion among all of us. So in the discussion part, let me give you the tips. In the discussion part, you people are to listen to others, not to be in rush, not to be in hush. Listen to others and give creative points. Creative points giving is very, very important, because these are open-ended case studies. You can give any points, and listen to other carefully and take their discussion forward. Let others also speak. If you find somebody is not participating, motivate them to also participate, and you should not look like not letting others speak or obstructing others. So this way we can go forward in the discussion. So now I open the house. Please discuss among yourself now.
Guys, I am Okay. Kushagra Vashisht, and observing what everybody has said, there is one thing that I would like to bring into your consideration that would in turn solve two problems. First is the ample space in the front, and second is the expansion of the already the food business that we are having. Two solutions that I can think of. ज्यादातर जब भी हम जगह विजिट करते हैं और वो भी अगर खाना बेचने वाली होती है तो एक तो वो फूड स्टॉल जो भी है, जो भी ठेले जो भी होते हैं या जो फास्ट फूड सामान बेच रहे होते हैं, आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, तो या तो हम फ्रंट की स्पेस उनको दे सकते हैं, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम ड्राइव थ्रू बनवा सकते हैं कि काउंटर बनवा दे और गाड़ियां लाइन में लग लग के और वहां से गाड़ियां पिकअप हो के चली जाए. तो ये ज्यादातर रेस्टोरेंट्स नहीं ऑफर कर पाते, और क्योंकि हमारे पास एम्पल स्पेस है तो ये दो सोल्यूशंस है. इससे हमारा एक तो एम्पल स्पेस भी यूज हो जाएगी और दूसरा हम हमारे जो करंट फूड बिजनेस है इसको एक्सपांड कर सकते हैं. आपका क्या मानना है गाइस? बिल्कुल कि हम यहाँ पर फ्रंट स्पेस को लाइक रेंट पे दे सकते हैं कुछ वेंडर्स को, लाइक जूस स्टॉल को या न्यूज़पेपर वेंडर को दे सकते हैं, और लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम लोग दे सकते हैं कि इन मॉर्निंग पीपल्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं सुबह सुबह, तो उधर से लौटते समय डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले जा सकते हैं अपने घर के लिए. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. I would like to say that we can also have, अगर स्टेशनरी शॉप वहाँ पे ओपन रहेगी तो कहीं ना कहीं मतलब उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा लोगों को. मैं रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. अगर हम एक प्रॉपर, जैसे कि हमारे फर्स्ट स्पीकर ने बोला कि हम एक ड्राइव वे भी बनवा सकते हैं, बट एक प्रॉपर रेस्टोरेंट जो भी अगर इस्टेब्लिश्ड है या हम उसको एक्सपैंड करने का जो सोच रहे हैं, तो हम एक कॉर्नर में लाइक प्रॉपर फैमिली के लिए एक जो रेस्टोरेंट बनेगा उसमें हम एक कॉर्नर में एक बैंड के अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि पीपल एंटरटेन भी हो सके उनसे, और एक लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे अगर वो रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करते रहेंगे जिसके चलते हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है. और सेकेंड थिंग, अगर नॉन फूड बिजनेस की जहाँ तक की बात है, मुझे लगता है कि जैसे कि एक रिच पीपल है तो उनके किड्स है और किड्स स्कूल गोइंग है, तो हम उनके लिए एक स्टेशनरी अरेंज कर सकते हैं, स्टेशनरी की शॉप खोल सकते हैं जहाँ से वो अपनी कॉपी किताब या जो भी पढ़ने के सामान वगैरह वहीं से परचेज करे. तो ये मेरे हिसाब से एक आइडिया है. आप अपना I think we have ample space in बिजनेस है ना. If we give it to, I mean, if we outsource the front space, I think we'll be getting the income without any investment. So instead of we installing any kind of stationery or restaurant, or we can outsource it to someone, then we can gain without any investment. Outsourcing is the best one, I think, for the front space. And I would like to add one point. I would like to add one point that the front space स्पेस का यूज बाद में कर लेंगे. पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे वो फूड बिजनेस इंप्रूव हो सकता है. जैसे एक पॉइंट ये भी है कि अपन ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं अपने फूड बिजनेस को, जैसे कोलेबोरेशन कर दे जोमेटो या स्विगी से, तो एक ये भी है, उससे भी बढ़ जाएगी सर. हाँ, फूड बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम एक ऐसा इनिशिएटिव भी ले सकते हैं कि रेस्टोरेंट में हम लोग टुडे स्पेशल जैसा चीज निकाल दें कि आज ये चीज जो है स्पेशल प्राइस पे मिल रहा है और फिर ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है. तो इससे क्या होगा, कस्टमर जो है उस पार्टिकुलर फूड के लिए अट्रैक्टेड रहेगा और फिर वो उसे खरीदने के लिए मतलब कि ज्यादा कस्टमर्स आएंगे. शुभम, यू आर राइट. एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जैसे अपन ना उनके कॉन्टेक्ट नंबर ले लेंगे और जैसे ही अपने पास कोई डिस्काउंट या फिर ऑफर होगा तो उनके पास डायरेक्ट ईमेल या फिर मैसेज कर देंगे इस चीज का. इसके लिए हम लोग inline I would like to add one more point that we are here in the business for about 15 years, so we had a very good customer database with us. So I think we know what are the hot spot food items that are being sold in our food business. So if we can increase the quality and also the taste of these items, I think that would be a better option to increase our food sales. Yes, and also coming to the front area, market survey करना चाहिए. Like let Ravi Kishan complete. He want to say something. Let Ravi speak first, and then everybody goes after that. Go ahead, Ravi. Yeah, thank you, Shagra. And also coming to the front space area, I think we can also keep the we can attract the school going kids by having some ice creams or some of the chocolate kind of things which are being sold.
and also we can keep some of the photo points according to the occasions, festivals and all, so that customers will be attracted to these things and they will be in turn coming to our food business. Right. I think that would be a great thing. Right. एंड What फ्रंट do you say, स्पेस के लिए friends? हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस गोइंग पीपल्स है तो वो लोग सुबह में नाश्ता नहीं करते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा हेल्दी फूड्स जो है वो हम लोग उसका स्टॉल लगवा सकते हैं, उसे आउटसोर्स कर सकते हैं, ताकि वो लोग वो चीज भी खाएं और हम लोग का हेल्थ के लिए भी प्रमोशन एक तरह से हो I would यस like सर, to सामने add. वाले स्पेस को हम स्ट्रीट वेंडर को दे सकते हैं, जो कि फास्ट फूड है, जैसे जूस है वगैरह, जो सुबह बच्चे जाते हैं उनके लिए ओपन हो सकता है। I would like to add one thing to the Shubham Saurabh's point. जैसे कि दो तरीके की चीजें हैं, किसी भी इंसान को अगर ऑफिस जाना है ना, तो और किसी को भी अगर स्कूल जाना है, तो देयर इज वन थिंग वेरी क्लियर दैट ही इज इन अ हरी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज टू प्रोवाइड बेवरेजेस ऑफ ऑल काइंड, लाइक कॉफी, टी, और वो रेडी टू गो होनी चाहिए. एंड सेकंड थिंग व्हाट वी कैन डू इज टू प्रोवाइड देम मील, मतलब जस्ट इन केस इफ दे आर कमिंग फॉर लंच एंड एवरीथिंग, देयर शुड बी अ होल मील रेडी फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स, या जिसको हम थाली भी कहते हैं किसी किसी रेस्टोरेंट्स में. तो इसका भी हमारे पास एक वी शुड आल्सो कम अप विद दिस काइंड ऑफ margin, because we have to target that employee age group as well. What you guys have to say about that? अगर you कुशाग्र, जैसे अपने ऑनलाइन जो डाला ही था उसमें, तो उसी से ऑर्डर कर देंगे ना वो, जैसे लंच टाइम हुआ या फिर. यस अनुपम, यस नरेंद्र से. यस 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 जैसे कि हम लोग यहाँ पर रैंडमली बात कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ तीन चीज पर ध्यान देना होगा. सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग फूड बिजनेस है उसको कैसे एक्सपेंड करना है, और सेकंड थिंग जो एम्पल स्पेस है हमारे पास उसको कैसे यूज करना है, एंड थर्ड थिंग जो है कि नॉन फूड बिजनेस कौन से लाना है. तो यदि हम लोग पहले एम्पल स्पेस वालों को क्लियर कर लें, तो उसमें हम लोग जैसे कि सब लोगों ने बोला कि वेंडर्स को रेंट पर दे सकते हैं, और वहां पर अट्रैक्टिव चीज जैसे कि हमारे पास जो मेन टारगेट है, हमारा कस्टमर है स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग किड्स है, तो उनके लिए अट्रैक्टिव जैसे कि मुंबई में बड़ा पाव का चलन बहुत ज्यादा होता है, तो बड़ा पाव का लगा सकते हैं, या फिर चाय सुट्टा का जो लगा सकते हैं, हम लोग स्टॉल लगवा सकते हैं. और ये सब हम लोग को रेंट पर ही देना चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, और साथ साथ हम लोग इस पैसे से आगे अपना एक्सपेंड भी कर सकते हैं. पहले हम लोग इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि एम्पल स्पेस अमाउंट को कैसे यूज करना चाहिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट पर आएंगे. इसमें किसी और ऐड करना चाहें तो बात और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, अगर आप मेरे को परमिशन दो तो. अगर आपको सही लगे तो थोड़ा बताना. जैसे ऑफिस गोइंग लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब उनका सीटिंग वाला काम ही रहता है मेनली, कोई मतलब फिजिकल वर्कआउट उतना नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनका थोड़े टाइम के बाद कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू पे आना स्टार्ट हो जाता है. तो कहीं ना कहीं अपन एक या तो कोई डाइटिशियन या कोई मतलब हेल्थ कंसर्न वगैरह की साइड में खोल दे, जैसे कई लोग आते जाते हैं उनसे मिलेंगे या डाइट वगैरह लेना की वो एडवाइस लेंगे, तो कहीं ना कहीं अपना उससे भी अपने एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा कि यहाँ पे तुम आ रहे हो, तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो तुम साथ साथ में ये आइटम भी खरीद सकते हो. तो मेरे हिसाब से अगर एक डाइटेशियन की शॉप भी हो साइड में, तो वो एक आइडिया मुझे ऐसा लग रहा है आइडिया. एम्पल स्पेस के लिए, जैसे कि एक स्पीकर ने बोला भी था कि गेमिंग स्पेस भी हम खोल सकते हैं, क्योंकि अगर अभी हम ऑफिस गोअर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम किड्स भी अदर टाइम पे अगर साथ में आते हैं उनके, तो पेरेंट्स भी आएंगे, तो गेमिंग वगैरह होने के बाद हम साथ ही साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रेस्टोरेंट में भी वो जा सकते हैं, और फिर डिनर करके फाइनली फिर Shivam, I would like to take from where you left. It was me who raised this point of gaming, and I would like to elaborate it if the whole group gives me a chance. There are two things that I've planned off, although it was not meant that I would discuss about the non-business part, but I have thought of discussing two ideas. First is the gaming part, and second is movie theater. और मुझे ये चीज इसलिए लगती है कि मान लो अगर आप 3 घंटे की मूवी, अगर आपने 3 फ्लोर में से सबसे टॉप फ्लोर पे एक मूवी थिएटर डाल रखा है, तो भले आप घर से खाना खाने नहीं निकले, इफ यू हैवंट थॉट ऑफ हैविंग फूड, बट जब आप 3 घंटे की मूवी देख के निकल के आते हो तो आपको ऑलरेडी भूख लग जाती है. और रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू अ गेमिंग एरिना, वेयर वहां पे पिनबॉल गेमिंग एरिना था वहां पे, तो वो 1-1.5 घंटा वहां पे आपको पिनबॉल से गेम खेलना सिखाते हैं. और हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था खाना खाने का, बट जब हमने 1 घंटा वहां पे खेला तो हम इतने थक चुके थे कि हमने फिर नीचे आके खाना खाया. So it is a very good marketing strategy, and two things that we can come up for the non-food part is having a game arena of any particular kind, digital or physical, and second thing is putting a movie theater on the top floor. What do you guys feel about that? Yeah, I agree with your point. Gaming space is a good one, but I don't think putting movie theater is a better one, because for movie theater lot of space has to be provided. Banquet hall और बर्थडे पार्टी और रिटायरमेंट पार्टी वी कैन यूज 1 फ्लोर फॉर, क्योंकि वहां के जो कस्टमर आएंगे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए, वो अपने नीचे जैसे रेस्टोरेंट है तो उसका यूज कर सकते हैं फूड के लिए. Yes, And sir, also, वहाँ I would रेस्टोरेंट भी like खोल to सकते add हैं, one और more एक point कम्युनिटी that we सेंटर भी can बहुत have खोल सकते हैं that जो for non
Yeah, go on. Yes. Manish, Yeah, please. for non-food business, we can think of like some gift shop, because all these office going people will be having some or the other occasion in their office, and they tend to celebrate all these occasions like birthday parties or something else, and they will be in a dire need of these gift shops. And also the school kids also, they will be having some of the fancy items or toys, and so we can have them in the gift shop too. So that would be a great good idea according to me. What do Ravi, you we say? can Yeah, I would like to add a Yes, few that's a points. good point. meeting The two floors which we are having at for ground floor can be used for birthday parties, because the area is full of people like office going people and school going children. So we can use one floor for parties, birthday parties, office get-togethers, family get-togethers, and the second floor can be used for stationery and also for gift shop. Both can be accommodated in the one floor, which attracts both school children and also people who will be going to parties. floor, on the at Krishna, the floor can be used for the open roof dinner or cafe. Yes. And also I think one of our friends has जैसे- suggested that stationery and gift shop should be given, but I think rather than stationery shop, we should be having a game zone there. Game zone and gift shop would be a greater idea, because they will be complementing each other. And stationery shop, I think most of the schools and around places will be having the stationery Also, shops. one thing. So I Also, think I would agree to Ravi, because we have मैं particularly बोलना never चाहता हूँ। seen a third floor having a stationery. We can never think of going to a third floor and then buying a stationery. You generally see it in the first or ground floor only. सागर अपने स्टेशनरी को हम लोग बाहर एम्पल स्पेस बाहर जो एम्पल स्पेस हमारे पास है स्टेशनरी को ऐड कर चुके हैं, तो हम लोग अलग से think about that. यस हम लोग को जो टू रूफ guys, we are also left with the basement. I think we can create a parking zone for it. Parking zone भी create कर सकते हैं basement में for the meeting office going people. Yes. Yeah, but Yes, that can be, but that's not जो mentioned. नॉन फूड बिजनेस चला रहा हूँ, अगर वो बिजनेस सक्सेस नहीं होता है तो हम फूड बिजनेस के रूप में ऊपर वाले फ्लोर को यूज कर सकते हैं। क्या वहाँ पर जिम ओपन कर हम सकते लोग हैं को थर्ड फ्लोर पे, कि ताकि वहां पर जैसे जिम ओपन कर सकते हैं, जैसे रिच एरिया है तो जिम भी रहेगा थर्ड फ्लोर पे, और नीचे आगे मतलब जूस कॉर्नर भी जूस तो यूज Yes, थर्ड फ्लोर पे जिम सुटेबल नहीं है क्योंकि आवाजें आएंगी, फिर उसमें आवाजें आती हैं वेट्स की, थर्ड फ्लोर पे ना करके उसको नीचे करेंगे फर्स्ट और अदर बेसमेंट। बोल रहे हैं कि वहाँ पे मीटिंग का भी ऑफिस बना सकते हैं वहाँ पे। यस सर, कम्युनिटी सेंटर बना सकते हैं, इससे आएंगे लोग। Anupam, go ahead. Anupam, you want to say something? यस मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो नॉन फूड बिजनेस है उसको हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो हमारे पास जो 2 फ्लोर्स हैं उसमें हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं खोल सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सकते हैं। और दूसरा जो है कैफे कॉफी डे का जो कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर हम लोग को एक माहौल मिलता है कि अपने क्लाइंट के साथ लोग डील करते हैं और उसमें चाय नाश्ता का व्यवस्था रहता है। तो अनुपम आई थिंक कॉफी शॉप की अलग से नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट वगैरह है बाकी मुझे लगता है कि जो कि जहां तक अभी बात हुई है गेमिंग स्पेस की एंड स्टेशनरी शॉप्स की एंड गिफ्ट आइटम्स फॉर चिल्ड्रन, सो दीज आर द सफिशिएंट थिंग्स दैट वी कैन accommodate in the ample space which are not we can get agree on this non-food business, and we can talk about the expansion of restaurant. We can in line with Anupam, I would like to say that rather than opening a coffee shop in some other floor, we can split our floor area, which is the 50 seating capacity. It's a huge seating capacity. We can have a separate arena for coffee cave type thing, so that we can serve there. That can be the part of the restaurant only. So yes, we should not separate. For that, we could come up with beveraging machines. They could right away. Yes, that can be done in the ample space. That can be done in the ample space provided ahead.
like the beverages and all that, हाँ or coffee, मैं that should be done in the मैं ample यहाँ space पर provided कॉफी in शॉप के लिए front. ही बोल रहा था ना। नहीं, अभी तक तो जो But डिस्कस हो चुका here है मैं कि जो एम्पल स्पेस वो तो वेंडर को ही देना है ना, ताकि उससे रेंट भी आ जाए, हाँ ताकि जो मनीष, उसका पहले here से एग्जिस्टिंग मतलब कस्टमर हो, ताकि मेरे साथ में जुड़ सके. Yes, if yes, you yes. allow me, I without would No, any like no, to now we investment, say, should I would we like should to But clarify my point. no, I would like to clarify my point. I am saying कि we should be having a separate place, because office people, they will be having some business meetings in cafes sometimes while having the coffee. yes, So yes, I yes. think a separate compartment in our own restaurant space, like say it for a 20 seating capacity, that would be a Ravi, better option. I am allow saying. me to yeah, Yes, allow me friend, to एक confront community you. center हम I खोल would like सकते to Yeah. हैं. slightly disagree, फ्रेंड because अगर why, आप you know ऑफिस why? खोलोगे तो Because we don't want customer to be of stagnated nature to come to our restaurants. We have to Yeah, we have to exactly. circulate the audience. yes, that's We cannot provide them a permanent seating arrangement, even though we are even though we are having Our 34 seats. main goal is to maximize the Exactly, profit exactly, for the to serve restaurant, as much and customers के as लिए possible. चार्ज तो कर सकते हैं Exactly, ना। so I Shivam. don't Guys, we need to meeting guys, we purpose need to should come solve to this come to consensus about the profitability. non-food business. We need to come to a consensus about Guys, non-food business. अपन We have ने to decide. Yes, we should फूड consider. के लिए बिजनेस है, इसलिए बोल उस रहा पर था। ये सब कम सेकंड Like फ्लोर थर्ड फ्लोर के लिए जो हम लोग कर रहे थे, तो नॉन ही फूड बिजनेस नॉन के Is लिए everyone प्लान okay है, with, I जैसे mean, ऑफिस मीटिंग हो गया, allocating it to the party? I think we should talk about the food business. How Location. can we yes, expand in that area? So I think one could be the conducting the survey which we can do. So because there are many food items which will be available in the restaurant, but some food items will more be famous among the people. yes, So Shivam, I would, yes, continue. Okay, so those food items can quality of items can be improved in a better way, so that people can come in more numbers. And other things in the restaurant itself that I talked earlier, we should accommodate some kind of entertainment facility as well, like some band or music singers who can entertain them in order to stay the people for a long time in the restaurant, and they can order more things. So Yes, sir. And But add one here, point about this. Yes, here, but we can also here I do would that like to say that focus on cafes. ब्रांडिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे लाइक कि हम अपने जो Last 2 minutes think for we have to- last 2 minutes conclusion के लिए ट्रेनिंग हो, how to serve. Okay. यूनिक Now प्रोडक्ट we बनाने चाहिए, Guys, ताकि I और think कहीं we need मार्केट to conclude here. outlets, yes, we हम लोग अपने पार्टी भी खोल सकते हैं, जो फ्री लंच बिजनेस है, ये भी कंक्लूड करने से स्पेस पहले है, मैं एक चीज हर जोड़ना ब्लॉक पे चाहूंगा यहाँ खोल पर। सकते हैं. कंक्लूड करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग को फूड बिजनेस को एक्सप्लेन करना था, तो फूड बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वहाँ पर एक कैंटीन सा भी खोल सकते हैं। जो ऑफिस गोइंग पीपल है, उनके लिए हम लोग या तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के उनसे संबंध स्थापित करके कहें कि हम अपना एक कैंटीन यहाँ पर लगाना चाहते हैं, या फिर अपना टिफिन सेवा दे सकते हैं उनको, क्योंकि बाहर में जो भी ऑफिस गोइंग लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है टिफिन के लिए। तो यदि हम उनको ये प्रोवाइड कर सकें तो ये भी हमारा एक अलग बड़ा हो सकता है। और दूसरा चीज है एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं इसमें फूड ब्लॉगर को बुला करके। और साथ साथ एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, आप लोग इससे एग्री करेंगे, जैसे डिफेंस एक्सपो एक होता है, जैसे कि कोई डिफेंस प्रोडक्ट है उसको बेचना होता है तो उसका एक एक्सपो लगाया जाता है, एक्सपोजर किया जाता है। उसी तरह से हम लोग अगल बगल के जितने भी जो रेस्टोरेंट होंगे उनको बुला करके यदि एक फूड एक्सपो टाइप का कुछ अरेंज कर सकें, तो उसमें हम अपना जो विशेष प्रकार का जो व्यंजन है और जो अलग अलग प्रकार के फूड्स हैं उनको यदि लोगों के पास सामने रखें तो एक अच्छा तरीका होगा अपने आप को एडवर्टाइज करने का। और इस प्रकार से हम लोग फूड बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। One thing that I would Coming to the advertisement part, I would like to add one more point. Our advertisement should be like selling an experience. Like we can see KFC finger looking good, or Pizza Hut, they have their own taglines and all. So we should be marketing our food business as an experience rather than the food commodity. What do you say? But don't you think these type of things only come when you have different franchisee, not for a particular restaurant, or even a particular restaurant can have that and still take the same yes, impact? Kushal, opinion and is Mr. Seth is planning for Mr. a franchisee kind of thing only.
Okay, Mr. okay. Seth Yeah. explained. Yeah. Yes, No, I wanted to clarify that is yes, I'm हम not लोग trying to Yeah, hide that's it. Yeah. Okay. Yeah, I But think we can even also if we are take not going to contract. franchisee also, we can also, if we are Okay. not going to franchise also, we can market it as an Come as a experience. trademark. Yes. Because Okay, okay. yeah, Okay. trade. I think we I can wanted also to. take contracts of supplying, I mean, catering food to school events, public events, office events. I think we can also take that contract too. Even if if we are providing at a low cost, even because the quantity is high, we'll be definitely getting profit. The I part that think I we should conclude no, now. Yeah, the- we're Yes, running it's out of time time. to I think we We are conclude. running out conclude. of time. We cannot talk about. We have already talked very much about the Yeah, non food business. So I think in non food food business, we can conclude that one will be the gaming space, and for kids, and other will be the gift items, and thirdly there will be what one thing I have forgotten. event hall. Event hall. Stationary items. I think. No, we were not no, putting no, stationery. event hall. Event hall. Yeah. Okay. Event hall, Stationery. event hall. Okay. Item is in And also, Party. Shivam, Event on the hall. same grounds what Shivam has said, I also wanted to consolidate regarding the ample space. That one point that we discussed was outsourcing and giving it to vendors. What are the other things I forgot to note regarding the ample I space? think How are we going to use Drive-in it? restaurant. that We was can put it as a drive-in drive-in restaurant. restaurant, and Sagar, that was if stationery possible, and if possible, we possible. have discussed about drive-in restaurant and also outsourcing and also a photo point kind of thing, things according Okay. to the occasion. We are putting the driving in also in the consideration as well, no? Because that is also a point Yeah. where we can. Yes. I think Okay. either we Yeah, have to choose. yeah, Either we have to yeah. outsource or we have to put a drive-in restaurant. Yes, That is because the- it is for ample this, space. Yes. for these two cases, I think these are two different cases. According to the situation and Right. according to the Budget. availability, we need to Yes, we yes. need to choose Okay. one of them. Okay. Yes. Okay. तो फ्रेंड्स तो So फूड now वाले ready? में I think we need to अपने थे conclude. ऑप्शंस Ready now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So who wants to conclude? Sir, I would like to conclude. Kushagra Vashisht. Thank you, sir, for giving me this opportunity to conclude. We had a very healthy and fruitful conversation. We tend to discuss regarding three major problems involving the expansion of current food business, using the ample space which is in front of the current food business, and second, finding a new solution for using the extra space and coming up with something apart from food department. So in the first part, where we have to improve our current situation, we thought of discussing applying online food deliveries, contacting to Swiggy and Zomato. Second, we thought of discussing giving special combos, meal and these thali, so as to attract a lot of consumers. Third, we thought of there was a point when we discussed regarding surveying the market and exploiting the weak points of our competitors. Then we also discussed regarding providing entertainment within that premises. Also, we thought of discussing. We also come up with advertising, like welcoming food bloggers, making pages of our food restaurant, and then we would also participate in catering services regarding marriages and schools and whatever possibly we can. For the ample space, first we thought of outsourcing it by welcoming vendors to open their stalls and expand the food business. Second, if we have the budget and if we have the infrastructure, we can also come up with drive-ins that would put us an edge over the rest of the restaurants in the town. And third, regarding non-food businesses, we thought of opening an event hall, a party hall, a gaming arena for the kids, and also a gift item shop as per the convenience and as per the space that is given to us. I'm very glad that all of us come to a common consensus, and that's it, sir. Thank you. Okay, so let me give you the feedback now. First, as far as the introduction is concerned, Narendra, your introduction was not good. I think you were shifting over to Hindi, English and all, and confidence was also an issue, Narendra. So Narendra, practice करनी पड़ेगी. As of now, I'll give you 6.5 marks. Practice, you need to do practice. Practice कैसे कर सकते हैं? जितने भी GT हैं, all the GT of HPCL, take them, read them,
and start speaking about that introduction and what you will speak, innovative ideas, and practice that. Put your mobile, record yourself and see whether you can speak or not. 1 या 2 मिनट में बात कर सकते हैं कि नहीं. That part is required, Narendra. As of now, you are not fluently talking, you are not speaking fluently, and content is also missing in your discussion. So अभी आप रेड जोन की तरफ हो, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा. Shivam, you have a good flow. The way you started, you got a good flow. You can talk, but you could not give direction to the discussion in the introduction. So introduction part, I'll give you 6.7. You can talk in between also, and you can conclude also. So try to work on your strengths. You can talk, communication, that is your strength. Content, enrichment लेके आओ, creative सोचो, workout. You have 10-15 GTs of HPCL. Think creatively what answer you need. Something which they learn first time, and that is good for you. I give you 6.7. Ravi, you need not to give so much details in the introduction. You started giving a lot of details. That is not required. But you gave the direction, food, non-food, how you should divide. That is a good part. So introduction was good from your side, but the person, we don't have time for details actually. They will not let you speak that much. So your strength is content you have, you can speak, but your weakness is you start speaking a lot, they will cut you short. So work on that particular thing. I give you 7 marks for this. Kushagar, you are okay. I mean, introduction you gave was good. Conclusion was also okay. In between also you are participating. So I give you 7. Kushagar, now go through all the GTs and HRs and try to enhance your content. Right, sir. And think the rest, everything part is okay. Shubham, Saurav, your flow problem is there. Shubham, Saurav, for you, flow problem is you need to speak. Hindi, English कैसे भी बोलो, लेकिन आपको बात करनी है, so that others understand it. In the group task is like a 20-20 match. You do not have much time. You have to give your point very fast, very small sentences, so that people understand that. You will not have all the time. So you need to very straight, Shubham, Saurav. You are little slow in explaining and telling others what you want to say. So that is where you have to work, Shubham. I'll give you 6.7. Nitesh, you explained well, but direction was missing in that, Nitesh. So you need to basically provide the direction. Communication is your strength. You can communicate, you can talk. Think creative, think innovative, provide the content to discussion. Take others people along with you, get involved in the discussions with other, drag them in your direction. That is what you should do. So I give you 6.8 for your performance. Dharmender, आपका flow अच्छा है. Direction was something which you introduction was good. That everything was spoken nicely. And the same thing which you did in introduction, if you do in the body part and conclusion, that will be wonderful. So you can speak, capability is there, but there's an inertia in talking or coming. So in the body, enter 2-3 times, but enter with a really good content and points. That is something which is required. So I give you 6.8, Dharmender. That is good thing. Manish, detailed explanation you gave, but direction was not provided there. And Manish, you have another problem that you may not speak when others are fluently talking. Somebody gives you chance, तो आप बात कर पाओगे. लेकिन अगर कोई चांस नहीं देगा तो शायद बात करने में मुश्किल आए. तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा ज्यादा बोलने का. इंट्रोडक्शन की ट्राई करना, वहां पे बोल पाओ, और कंक्लूड करने की ट्राई करना. और थोड़ा सा आपको बाकी लोगों के साथ मैच करके बात करने में थोड़ा इशू आएगा, वो प्रैक्टिस से ही जाएगा. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की ट्राई करो. उनकी बात सुनो, उनकी बात में बात बोलो. राइट सर 30 मिनट तक मेरा अनम्यूट था सर, इसके चलते मैं कुछ बोल पा नहीं रहा था. नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन के बेस पे मैं बता रहा हूँ सारा. जो तुम इंट्रोडक्शन और पुराना है ना जीटी, उसके बेस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लम यू विल फेस. आई विल गिव यू मनीष 6.6. कृष्णा, एक्सप्लेनेशन प्लस डायरेक्शन दोनों ही अच्छा था. फ्लो भी तुम्हारा अच्छा मेंटेन हुआ है कृष्णा. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में तो ठीक है. बॉडी पार्ट में थोड़ा बोलने की ट्राई करो, कंटेंट को एनहांस करो. कंटेंट अच्छा बोल दिया 3-4 बार बीच में तो आपका हो जाएगा. सो कंटेंट पार्ट क्रिएटिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. दैट इज वेयर यू शुड वर्क कृष्णा. सो आई विल गिव यू 6.8 कृष्णा फॉर योर डिस्कशन. उत्तम, योर फ्लो एंड एनर्जी इशू इज देयर फॉर यू. आपका फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है, एनर्जी लेवल कम है, और पार्टिसिपेशन भी आपका नहीं आ रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी में बैठे हैं. वहां पे वर्कआउट करना पड़ेगा. वो थोड़ा अपने आप को कन्विंस करें कि मेरे को आधे घंटा अपने आप को चेंज करना है और मेरे को एक्टिवली वहां पे पार्टिसिपेट करना है और मेरे को वहां पे क्रिएटिव बातें बोलनी है.
तो जो ग्रुप टास्क हैं जितने भी HPCL के वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे पैनल के ऊपर या स्टूडेंट्स के पास हैं, उनको गो थ्रू करो, देखो क्या बेस्ट बोल सकते हैं आप, उस पर प्रैक्टिस करो। एंड इंट्रोडक्शन अगर चांस मिले तो इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से करना या कंक्लूजन अच्छे तरीके से करना और बीच में 2-3 बार बोलना और एनर्जेटिकली थोड़ा फास्ट पेस के ऊपर उत्तम बात करना। आई विल गिव यू 6.5 उत्तम। Anupam, आपकी explanation was good, but it was very long. I found your explanation very, very long. I mean, you will not have that much of time, Uttam. Sorry, Anupam, in discussion. Anupam is there, right? Anupam is not there. Okay, so let सर me. उनका नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है सर, इसलिए मैसेज किए हैं अभी। So आपका डायरेक्शन लेकिन आपने अनुपम डिस्कशन में नहीं दिया। I'll give you 6.9. The rest is okay, but try to keep it straight, very straight answer. Try to keep it and not very, very long answers. That is how you have to do it. So that's all from my side. Now let me tell you, some of you are comfortable in talking. जैसे Nitesh can talk and this Kushagar can talk, Shivam can talk. Krishna can also talk. Ravi Kiran can also talk. Some people are having hesitation. Narendra, Manish, Uttam, then Shubham and Dharmender. Shubham and Dharmender can talk. They have the capability, but inertia is there. Little bit inertia is there. So that's all from my side. Anything you want to ask or tell now? सर डिस्कशन में तो मैंने काफी पॉइंट बोले हैं आज। हेलो, Just give me 1 minute. Person is waiting. I will change our test. Don't leave. शिवम, आप लोग को कब है मीटिंग? हाँ कुशाग्र। brother, you look a lot like Biswa. क्या Yeah, क्या रिपीट अगेन? tell me what you were saying. Sir, Narendra has to ask something. We will talk later. हेलो। Yeah, go ahead. सर डिस्कशन में तो काफी पॉइंट बोले थे आज मैंने, 5 to 6 पॉइंट दिए हैं। हाँ नरेंद्र, आप एनर्जी लेवल एनहांस करो अपना। It is not speaking is important, it is with energy you have to speak. थोड़ा fluency. Sir, how can I maintain my flow, sir? Tell me again. Sir, how can I maintain my flow, sir? Like, see, practice से आता है. This all comes with the practice. You need to do a lot of practice for that. You need to do a lot of practice for that. It comes only with practice, right? सर यहाँ पर जैसे फ्रंट स्पेस पे बहुत सारे ऑप्शन मतलब सभी ने दिया है सर कि हमें टी स्टॉल स्टेशन। हेलो, या गो अहेड। सर जैसे फ्रंट स्पेस पे बहुत सारे हम लोग ने ऑप्शन दिया, तो सर क्या हमें कंक्लूड करना है कि हमें कोई एक 2-3 पॉइंट ही सेलेक्ट करना है या सबका ही ऑप्शन कंक्लूजन में लेना है सर? हेलो, ओके, टेल मी अगेन। सर जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग ने डिसाइड किया बर्थडे पार्टी के लिए, तो कुछ लोगों ने कुछ और ऑप्शन दिया, तो सर हमको सबका ऑप्शन आपको क्या है, आपको शुरू से अगर कंक्लूजन करना है, देन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग you need to tell others that friends, this point is looking good, so what do you think? Can we take this point finally? And when they say yes, and if you think that point is good, you take this down, you write that point. Otherwise what is going to happen is when you conclude at the end, people may or may not agree with you. So when discussion is going on, that is what I'm telling you, when discussion is going on, you have pen and paper with you, keep jotting down the points which everyone agrees. That is called consensus. And leave many points which are not important, which may not agree, people may not agree. That is how from the beginning you have to do, make a consensus. And the person who is making that consensus or writing that summary is eventually going to conclude.
सर अगर जीटी में ऐसा टॉपिक है कि काफी कंटेंट नहीं है, मेरे को उसमें नॉलेज नहीं है ज्यादा उसके बारे में, तो फिर उसको कैसे मतलब See, I don't इनहेंस कर agree to सकते this. हैं? Number one, HPCL is asking same GT. That is number one. So if you say I don't have content, means you're not Yes. ready. Number two, HPCL GTs are very simple. Even if they are coming from outside, so many GTs are there on the panel. So that situation should not come and will not come where you do not know what is to be spoken. That means it is related to your knowledge part. I'm asking you, these are the 10 Like questions new which will come topic, in exam. in case of new topic comes, so Yes, because the person who is doing lot of hard work is going to get, questions which he has gone through, and then he is going to confidently answer that. Even HR, some students have not even gone through the HPCL document which is provided to them. So when they are asking who is the CMD, they are not even knowing it. So if you Yes. don't know the name of CMD because you have not read it, in the interview you cannot be confident. So you need to put effort, you need to work hard. There's no substitute for that. Work hard here means we know that these are the topics which are going to come. We know that this is a solution provided to this task, and we know there are so similar tasks which we have covered. That effort you have to do. That will bring you confidence. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर। जितना आप nice day. करोगे, जितना आप एफर्ट करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं देखता हूं जब बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो वही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जो मेहनत करते हैं। वो दिख जाता है, एज अ टीचर मेरे को दिख जाता है कि वो एफर्ट कर रहा है, वो लर्न करने की ट्राई कर रहा है। जब दिख जाता है तो दीज गाइज स्कोर इवेंचुअली। सो आप मेहनत करो, आपको जो आपकी शॉर्टकमिंग्स बताई गई है। एंड नंबर टू, these you all are your competitors. Ask yourself a question: are you the best in this group? There are only 10 students, and then there's so many such on your PDF panel itself. Are you the best? If answer is no, then how you will get selected? Tell me. Because only best will get, no, only top 20-30% students will get it. Are you among top 20-30%? Answer is no. Then it is clear, either you compete them. How to compete them? See how these guys are doing, others are doing, where they're better than you. Do self-analysis. So you can do self-analysis, you can compare yourself with others. And I tell you one thing, the person who will get will be the person who puts more effort than others. That's it, simple. So this is your effort, you have to do it. But only what is the methodology, how it is to be done, that I can tell you. That this is the solution for this can be the solution, start thinking in this way, that I can tell you. But eventually it is you have to go for it, right? Chalo, then now I take leave of you and prepare on this line. Have a nice